Good afternoon, CA intermediate students. So let us start with the Q&A session for chapter number 1. So let us just jump on to the case study that we have for solving today. So this is a very good case study, I should say. So it's a Me and You Private Limited has been newly incorporated. The plant of the company has recently started production with the help of funds provided by a bank for the purchase and installation of machinery. Further, the company is also utilizing working capital limits from the bank for meeting its day-to-day working capital requirement, like purchase of raw material, labor payment, etc. However, just within 6 months of its operation, the management feels that the working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company. The management of the company has approached its bankers and requested for enhancement in the working capital facility. तो बेसिकली है क्या, कंपनी ने लोन लिया, कंपनी को लग रहा है लोन थोड़ा कम है, तो वो और वर्किंग कैपिटल लोन लिमिट के लिए जा रहा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल देखो दो टाइप के लोन होते हैं, टर्म लोन होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन होता है। अभी प्लांट एंड मशीनरी परचेज के लिए जो कंपनी ने लोन लिया था दैट इज टर्म लोन एंड द अनदर वन इज वर्किंग कैपिटल लोन, जो कि बेसिकली कंपनी ने अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए ले रखा है। तो कंपनी चाह रही है कि वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी और बढ़ाए। The bank manager is insisting upon financial statements of the company for half year, along with the report providing assurance in this respect duly signed by a CA as audit is far away. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मुझे ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दो 6 महीने के, जिसमें उसमें पता चले कि आपने क्या परफॉर्मेंस करी है। It also required projected financial statement for coming years, along with the report from CA providing assurance regarding these projections to consider request of management. तो वो दो चीजें मांग रहा है, एक तो बोल रहा है जो पिछले 6 महीने के फिनेंशियल्स है वो दे दो मुझे, दूसरा वो कह रहा है कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दे दो मुझे। ठीक है, द मैनेजमेंट अप्रोचेस सीएपी हु हैज क्वालिफाइड रिसेंटली एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइडिंग एश्योरेंस फॉर हाफ ईयरली रिजल्ट्स एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सॉर्ट फ्रॉम सीएपी। तो बोल रहा है कि हाफ ईयरली रिजल्ट जो एक्चुअल हुआ है उसके लिए रिपोर्ट दे दे, और दूसरा जो प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें दो दो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तेरे से मतलब करवानी है, एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर 6 months द मैनेजमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स टू हिम इन दिस रिगार्ड। अभी देखो इसमें क्या दिया, अज्यूम इन अबव केस द कंपनी ओनली प्रोवाइड्स trial balance, financial statement in draft or preliminary form, along with the accompanying records for the relevant half year to CAP, and request him to provide duly signed financial statement. तो कंपनी ने क्या किया, उसे ट्रायल बैलेंस दे दिया, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए अलोंग विद सम नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अलोंग विद सम अकम्पनिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, और बोला कि इससे तो मुझे फाइनेंशियल्स बना के दे दे। तो ये जो काम हुआ, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट हिम टू प्रोवाइड ड्यूली साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ क्या मांग रहा है, साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कि रिपोर्ट। तो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनवाना चाह रहा है। ठीक है, विद द रिपोर्ट फॉर अ म्यूचुअली अग्रीड विद द रिपोर्ट ड्यूली साइंड फाइनेंशियल्स विद रिपोर्ट। अभी जो रिपोर्ट होगी दैट विल बी रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस, क्योंकि मैंने क्या किया, सिर्फ कंपाइलेशन ऑफ एंगेजमेंट किया। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कंपाइलेशन ऑफ एंगेजमेंट किया, क्योंकि उसने मुझे दिया क्या था, सिर्फ और सिर्फ टीबी दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी और प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन दी। राइट, उसने मुझे कभी भी पूरा डेटा नहीं दिया, मतलब पूरा ऑडिट के लिए डेटा नहीं दिया। तो ये ऑडिट हो नहीं सकता, रिव्यू नहीं हो सकता। रिव्यू में तो आपको क्या करना पड़ता है, इंक्वायरी और वेरिएंस एनालिसिस। इसमें आपको क्या दिया इसने, सिर्फ और सिर्फ इसने बेसिकली आपको, देखो सबसे पहले आप समझो ये क्या है, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन है। ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्या लग सकता है, या तो ऑडिट या रिव्यू या एसआरएस। ठीक है, अभी ऑडिट है नहीं क्योंकि इसने पूरा सारा डेटा नहीं दिया, रिव्यू है नहीं क्योंकि इसमें रिव्यू के लिए चाहिए होता है वेरिएंस एनालिसिस, इंक्वायरी प्रोसीजर्स, वो सब कुछ भी नहीं दिए। इसने बेसिकली क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए ड्राफ्ट, उसके बेसिस पे हमने कंपाइल किया और ओपिनियन दे दिया। तो इट वुड बी इट्स अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस वुड बी एप्लीकेबल ऑन इट। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया जो इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन सिचुएशन। ठीक है, CAP can assist management in the preparation of the financial statement of the company and he can issue a compilation report in this respect. वो report दे सकता है but it will be a compilation report, क्योंकि उसने हमें दिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया है और फाइनेंशियल दिए है, हमें ऑडिट तो करवाया नहीं उसने। ठीक है, द रेस्पॉन्सिव, अब ये वाला पॉइंट इसलिए नहीं है
The responsibility of the preparation of the financial is of the company's management. CAPE cannot assist management in the preparation of the financial statement. However, he can issue a review report. अभी ये रिव्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि रिव्यू के लिए तो आपको प्रोसीजर करने पड़ेंगे. आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कंपाइलेशन किया. आप अश्योरेंस नहीं दे रहे इसमें, आप सिर्फ एक कंपाइलेशन की रिपोर्ट दे रहे हो कि भाई मैंने कंपाइल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बना के दिए. In the above scenario, for issuance of the signed financial statement for half year by CAP, identify the most appropriate statement. ठीक है. SQC1 is always applicable. चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो इसका तो बहुत सिंपल है. SQC1 is applicable in such type of engagement. SQC1 is the boss. It will be applicable to all the engagements. ठीक है. The banker of a company is also requested for projected financial statement. इसमें आप कौन सा स्टैंडर्ड लगाओगे? ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है, आंसर है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा है. अभी बेसिकली क्या है, अभी आपको CAP ने also accept the work of issuing projected financial statement with the report to be signed by him. ठीक है, with the report to be signed by him. ठीक है. The management has projected turnover of 100 crore for next year, 150 crore and 200 crore for the following year. मतलब 3 साल की प्रोजेक्शन दी है उसने. ठीक है. Respectively as compared to the present turnover of 25 crore. 25 करोड़ इस हाफ ईयर में है, तो 25 करोड़ का डबल 50 करोड़ तो इस साल में टर्नओवर हो जाएगा. ठीक है. वो बोल रहा है 100 करोड़ अगले साल हो जाएगा, 150 अगले साल हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा. तो अब इसमें बेसिकली अजम्पशन है, राइट. तो इसमें मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे देखना था कि the assumptions used by the management in the preparation of the projected financial information is not unreasonable. मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेट्स रिवाइज. ठीक है. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे चेक करना था कि जो assumptions है that are not unreasonable. ठीक है. दूसरा फिर properly prepared in accordance with such an assumption, properly presented and all assumptions have been disclosed. ठीक है. ये मेरी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो अभी बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी यही होगा. CAP has to satisfy himself regarding the reasonableness of the assumption underlying projected turnover, its consistency with the actual disclosure and presentation. So this is the answer of it. ठीक है. तो बाकी सब में सारे पॉइंट्स नहीं कवर हो रहे, किसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन कवर हो रही है, किसमें सिर्फ और सिर्फ assumptions कवर हो रही है, लेकिन हमें तीनों चारों चीजें कवर करनी है. तो इसलिए ये आंसर सबसे अप्रोप्रिएट है. अभी चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट. ठीक है. मैंने बोला इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ये भी है. इट एक्ट्स एज ए मॉरल चेक, ये भी हमने पढ़ा था. इट एनहांसेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस, ये हमने नहीं पढ़ा, राइट. इट हेल्प्स इन सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी हमने पढ़ा था, बट हमने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा. तो इट एनहांसेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस, मतलब मैनेजमेंट बायसनेस मींस मैनेजमेंट पार्शियलिटी करता है. ठीक है. तो ऐसा कुछ तो it cannot be an advantage, right? So it's always it will be odd one out. ठीक है. Which of the following is not true about an assurance engagement? It relates to providing assurance about historical financial information. यही गलत है भाई. assurance तो प्रोस्पेक्टिव के लिए भी हो सकता है, करेक्ट. हमने जैसे पढ़ा assurance on prospective financial information. The practitioner obtains sufficient appropriate evidence, ये हमें पता है. There is some information to be examined by practitioner. इसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर. इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर. इस वाली चीज को हम क्या क्या बोलते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेके वो कंक्लूजन बनाता है, करेक्ट. रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म इज इशूड बाय द प्रैक्टिशनर, ये भी सही है. तो बेसिकली क्या सही नहीं था जो हमने हाईलाइट किया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड. एंगेजमेंट एंश्योर प्रॉपर राइट्स तो नहीं देता, वो तो ड्यूटीज बताता है कि भाई आपको ये काम करना है, तो ये ट्रू नहीं है. एंगेजमेंट स्टैंडर्ड आर एंश्योर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस, लेकिन ये तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये कैसे प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस को एंश्योर करेंगे, ये भी गलत है. These ensure uniformity by practitioner in the course of performance of their duties. अभी एकदम सही है मेरा. What does engagement standards promote? It ensures uniformity in the performance of the duties by an auditor. This is the right answer. It ensures savings in the resources of client. ये भी ऐसा कुछ नहीं है. Consider following in relation to a limited assurance engagement. ठीक है. Limited assurance means आप कौन सी assurance दे रहे हो, moderate level of assurance. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw reasonable conclusions. यही पे गलत हो गया. ये होता है limited conclusions, अगर आपको याद हो. चलते हैं ऊपर वापस. Let us try to recap. बेसिकली आपने अगर पढ़ा हो, लिमिटेड एश्योरेंस में हम जो देते हैं लिमिटेड कंक्लूजन्स देते हैं, टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन. वो बोल रहा है रीजनेबल कंक्लूजन, तो गलत हो गया ना, वो लाइन गलत है. ठीक है. तो दैट इज इनकरेक्ट. आगे चलते हैं. फिर चलते हैं स्टेटमेंट 2. रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज अ एग्जांपल ऑफ अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट. तो बोला रिव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिमिटेड एश्योरेंस. मैंने बोला हाँ, रिव्यू
and also an opinion on the prospective financial information is also an example of a limited assurance engagement. So the statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So that is the right answer. This is our right answer. So I have highlighted, right, guys? Okay. Which of the following is true about standards on auditing? क्या सही है इनमें से about standards on auditing? These deal with mainly with voluntary responsibility of the auditors. No, these are always to be applied, right? These deal mainly with mandatory responsibilities of the auditor. This is the right answer, right? Their sole purpose is to help government authorities in augmenting revenue. Not correct. These deal mainly in carrying out audit according to legal provisions. Not correct. So though the only right answer is fifth ka B point. Correct. So let us try to basically verify it from the ICI study mat, but yeah, obviously it would be the answers what we have discussed. So yes, so let us jump on to fifth ka B. Correct. So this is the right answer. Correct. Let us then correct and incorrect answer. So the basic objective of audit does not change with reference to the nature, size, or form of an entity, right? So abhi yaad karo, this statement is correct because what we are saying, audit is an, let us learn the definition of audit. An audit is an independent examination of a financial information of any entity, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट ट्रस्ट हो. करेक्ट, हमने ये पढ़ा था ना, when such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon. तो basically इसका आंसर भी यही है. इसका आंसर क्या है? An audit is an independent examination of a financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. फिर हमने objective as per essay 200 भी पढ़ा, तो जो कि क्या बोलता है? Our objective is to report on the financial statement. It is clear that the basic objective of auditing, that is the expression of opinion on the financial statement, does not change with reference to the nature, size, or form of an entity. So that is the answer for this question. चलते आगे. The purpose of an audit is to enhance the degree of the confidence of the intended users in the financial statement. So this is absolutely correct. So the purpose of an audit is to enhance the confidence of the users in the financial statement. तो ऐसे 200 क्या बोलता है? The purpose of an audit is to enhance the degree of the confidence of the users in the financial statement. This is achieved. अब हम ये कैसे देते हैं? हम कैसे confidence बढ़ाते हैं? By expression of an opinion by the auditor on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. तो इसमें भी आपका same answer आ जाएगा, objectives of audit. ठीक है? To obtain reasonable assurance that the financial statement as a whole, अभी हम कैसे देते हैं? Enhance कैसे करते हैं हम confidence users का? By expressing an opinion. So basically, this is achieved by the expression of an opinion by the auditor on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. ठीक है? अभी चलते हैं next MCQ, next incorrect or incorrect पे. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero. एकदम सही बात है. हम 100% assurance नहीं दे सकते. हमने पढ़ा था ना, हम 100% assurance नहीं दे सकते. And cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud or error. तो ये एकदम सही आंसर है. This is exam as per essay 200. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero, and therefore cannot obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud or error. This is because there are inherent limitations of an audit which result in most of the evidence on which the auditor draws conclusion and bases the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive. So basically, क्यों नहीं दे सकता 100% assurance? Because there are inherent limitations of an audit. This is because there are inherent limitations of an audit which result in most of the audit evidence on which the auditor draws conclusion and bases the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive. Persuasive means आपको आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, लेकिन इट्स नॉट अ कंक्लूडिंग एविडेंस कि 100% सही है. ठीक है? तो और क्योंकि हम सैंपल बेसिस पे करते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इसलिए you can't give absolute assurance. So let's revise. The basic objective of the audit does not change with reference to the nature, size or form of an entity. This is correct. हमने यहाँ पे definition learn करी और हमने बोला कि basically हाँ छोटी entity हो चाहे बड़ी entity हो, objective एक ही है, to report on the financial statement, right? The purpose of the audit is to enhance the degree of the confidence of the intended users. जवाब है हाँ.
अब ये कैसे हम करते हैं, हम दिस इज अचीव बाय एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, ठीक है, हम ओपिनियन देते हैं, करेक्ट, दिस इज एक्सप्रेस बाय whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable FR, ठीक है, हम ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं ला सकते एंड वी कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, राइट। तो मैंने बोला एकदम सही बात है, दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो कि हम जो हमें जो एविडेंस मिलता है दैट इज परसुएसिव बट नॉट कंक्लूसिव ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट व्हिच रिजल्ट इन मोस्ट ऑडिट एविडेंस ऑन व्हिच द ऑडिटर draws conclusion and basis the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive। अभी चलते हैं, choosing of appropriate accounting policies in relation to accounting issues is responsibility of management। choosing of appropriate accounting policies in relation to accounting issues is responsibility of management, correct, एकदम सही बात है। Do you agree? Yes। discuss duty of the auditor in relation to accounting policies। अभी देखो, अब याद आना चाहिए आपको, हमने जो पढ़ा था स्कोप ऑफ ऑडिट का पैराग्राफ, राइट, जहां पे हमने क्या पढ़ा था, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्री थिंग्स दैट इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। He should cover all the aspects of an entity that are relevant to the financial statement. He should obtain, he should be satisfied that the information contained in the underlying accounting records is reliable and sufficient for the purpose of preparation of the financial statement, ठीक है। इसमें वो accounting system, controls, appropriate test carry out करके उसको comfort लेगा। And the last point was proper disclosure of the financial information। इसमें एक point था, है ना, इसमें क्या point था, the auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies by management, whether such a selection is proper and whether the chosen policy has been applied consistently on a period to period basis। तो ये वाले क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, the auditor evaluates selection and consistent application of the accounting policies by management। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर इवैल्यूएट, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, तो इसका पहला पॉइंट है ऑडिटर इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय मैनेजमेंट, whether such a selection is proper and whether the chosen policy has been applied consistently on a period to basis, ठीक है। तो मैंने बोला इवैल्यूएट करता है सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय मैनेजमेंट, फिर देखता है, पहले वो इवैल्यूएट करता है, देन वो सी करता है whether such selection of accounting policy is proper and this policy has been applied consistently on a period to period basis। So this is the responsibility of auditor in relation to the accounting policy। अब चलते हैं, assurance engagement are not restricted to audit of the financial statements alone। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इसमें रिव्यू भी आता है, इसमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोन। तो इसका आंसर क्या होगा, अश्योरेंस एंगेजमेंट की आप डेफिनेशन पढ़ो और एग्जांपल्स पढ़ो, ठीक है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर इज आर कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, क्या, to enhance the degree of the confidence of the users of the financial statement other than responsible party, ठीक है, ये हम करते हैं other than responsible party, एक सेकेंड, that to know them the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against the criteria। That is what we have learned for assurance engagement, right, about the outcome of the evaluation or measurement of the subject matter against criteria। This is what we have learned about assurance engagement। तो सेम बस आपको 1 सेकेंड ये लिखना है और आपको बोलना है अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3-4 चीजें आती है, ऑडिट भी आता है, रिव्यू भी आता है, ठीक है। अश्योरेंस एंगेजमेंट 2 टाइप के होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है। फिर आपको पता है ऑडिट में, रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस, ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है। लिमिटेड एश्योरेंस क्या होता है, इट्स अ लेवल ऑफ एश्योरेंस लोअर देन द रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व द 3 पार्टी रिलेशनशिप। हमें पता है एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, एक इंटेंडेड यूजर्स होते हैं, एक प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है। डिस्कस मीटिंग ऑफ 3 पार्टीज इन सच एन एंगेजमेंट। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा, जहाँ पे हमने बेसिकली बोला था ना 3 पार्टीज होती है, राइट। तो 3 पार्टीज कौन सी होती है, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स, करेक्ट। 1 सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे, जहां पे बेसिकली सीए को बुलाया गया है टू चेक वेदर द फ्रॉड एग्जिस्ट और नॉट। सो दिस इज इन द नेचर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट and it's not an example of a reasonable assurance engagement, but rather it's an example of an investigation wherein an auditor needs to evaluate critical examination
he need to critically examine each and everything, right? So it's not a assurance. It's not a reasonable assurance engagement, right? It is covered within the scope of investigation. ठीक है? तो हमने पढ़ा था ना investigation क्या होता है basically. Investigation is basically not so it's not in the nature of investigation. मतलब but ideally it's in the nature of investigation because investigation is a critical examination of the accounts with a special purpose, and it's basically with a special purpose that whether you have to identify whether a fraud exists or not. ठीक है? An audit does not provide absolute assurance. Discuss how the nature of the audit procedure itself is one of the reasons due to which it cannot provide absolute assurance. Absolute assurance हम क्यों नहीं दे सकते? अभी हमने ऊपर MCQ में पढ़ा because there are inherent limitations to audit, right? अभी inherent limitations to audit क्या है? तो inherent limitations to audit का एक point है nature of audit procedures, right? तो हमारे audit procedure हो that is on sample basis. हम बंदूक रख के data नहीं निकलवा सकते, right? और मैनेजमेंट की क्या पता इंटेंशन ही खराब हो या फिर मैनेजमेंट हमसे कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ही छुपा रहा हो, तो बेसिकली ये हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, करेक्ट? एंड दिस इज हाउ वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर and hope you have liked these videos. So do let me know if you want to enroll for this batch. Just give me a call at the number that is mentioned in the description box of the YouTube classes, and I will be trying to upload revision lectures for most of the chapters of the CA Inter audit. But yeah, the full lectures are now over, and now it will be only revision videos that will be uploaded on YouTube. If you want to enroll for this batch, you want to learn practical insights and practical thoughts into this, then happy to have you in this batch. Thanks a lot. Okay, bye. Thanks a lot. Have a good day.